Hello class 7 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, welcome back to the video series of your chapter number 5. So as today's date is 20th July 2020. So class, in the last video we have discussed till this point its range. So let us discuss range once again. That range is basically a collection of a cell, a single cell or a entire big वर्कशीट. कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल सेल भी हो सकता है और पूरी की पूरी वर्कशीट को भी आप रेंज में इंक्लूड कर सकते हो. You can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address. Both are separated by a colon. Suppose आप सेल C1 और C10 में कुछ वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30 and you want to calculate the sum of all the items from cell 1 to cell 20. So let me give you an example. So this is our cell. This is cell number A1, okay, A, then 1. So there are some numbers into this: 10, 20, 5, 6, 30, 2, 9, 7, 6, 5. And suppose you want to calculate the sum of all of them. आप इन सबको प्लस करना चाहते हो. So you will write A1 colon and the last address of element A10. Okay, so this is how you can give the range. A1 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. There is no need to write A1, A2, or colon A3, then colon A4. There is no need. You have to just write the first cell address, colon, and the last cell address. Okay, so after this we have another topic, that is name box. So what is name box? As the name implies that नेम बॉक्स मतलब कुछ ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आप नेम डालते हो, कुछ किसी चीज़ का नाम डालते हो, वेदर इट इज़. सो लेट्स डिस्कस. नेम बॉक्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो. कहाँ पे होता है? देयर इज़ अ विंडो. क्लियर? दिस एरिया डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर. कहाँ पे होता है? सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड ऑन द कॉलम, लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, एंड इट डिस्प्लेज द सेल पॉइंटर लाइक दिस. क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. वेयर इज इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स. This bar shows the data and formula that you entered in a active cell. What is active cell? That cell जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है, just like this. In this example, only this cell is active in the sheet. Other all are passive or deactivated. And this is your name box. This is your name box as it is located at the top left side of the window. This is your name box. And after that we have a formula bar. Where is it? Is formula bar. This is your formula bar. This is your formula bar. कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है? Whatever you will write, it will display over here. Clear? So after this, so name box and formula bar. After this we have a column heading. कॉलम हेडिंग आप कुछ भी दे सकते हो. कॉलम का कुछ नाम देना है. यू कैन चूज द लेटर A to Z, A through AZ and up to total 16,384 columns. So this is your columns, like you can name them. This is your red. Clear? Columns. So these are the columns. After that, row heading. What is row heading? Row heading are the number marked from 1 to this much along the left border of the worksheet to represent the row. So this is the left border of the worksheet. Here he said left border of the worksheet to represent
the rows. So there, this is row and this is column. Okay, and after this we have a status bar. Status bar is located at the bottom of the Excel window. It gives the information about the current selection. It includes the name of the currently selected command or current activity. It also displays the warning symbol. So this is your status bar. So in this window, this is your status bar. This one is your status bar. Here we have your status bar. Okay. So after this, so these are some of the components of Excel window or a worksheet. So next, moving to the moving around the worksheet. How you can move into a worksheet. अब worksheet में घूम कैसे सकते हो, कर्सर के थ्रू आप कैसे मूव कर सकते हो. So there is also some ways to input data in a worksheet. We have to move the cell pointer from one cell to another with the help of shortcut keys are there. So आपको एक पार्ट से विंडो के दूसरे पार्ट में जाना है. So there are some shortcut keys that will help you. This shortcut key moves one column right. If you are here, यहाँ पे हो, जैसे आप ये प्रेस करोगे दिस वन, आप यहाँ चले जाओगे, देन वन. ओके, so this will help you to move one column right. This is from one column left. If you are here, this will help you to move here. Move one row up, एक ऊपर जाने के लिए. This for one move one row down. Page up, move the active cell highlight to the first row of the spreadsheet and can also be used as alternate to scroll up the worksheet. So basically what is the purpose of the page up? It is basically use an alternate to scroll up the window. Window को ऊपर ले जाने के लिए. So this is your scroll button, this is your scroll bar. तो इसको ऊपर करने के लिए you can, there is no need to use a mouse to do that. आप पेज अप के ऑप्शन से भी इसको यूज़ कर सकते हो. वन मोर वर्क ऑफ दिस इज मूव द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द फर्स्ट रो ऑफ द स्प्रेडशीट. जैसे ही आप पेज अप करते हो तो जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनको हाईलाइट करता है ये. ठीक है. नेक्स्ट, पेज डाउन, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ अप. बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? इट मूव्स द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द नेक्स्ट शीट. ये फर्स्ट रो में करता है, ये नेक्स्ट शीट में करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्क्रॉल डाउन द वर्कशीट. आप इसको जैसे पेज डाउन यूज़ करोगे ये नीचे आ जाएगा. क्लियर? सो कंट्रोल प्लस होम मूव द सेल पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो. जैसे ही आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस होम, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा. होम मीन्स the first row. Clear? And if you use control plus and move the cursor to the last cell of the worksheet, last cell it doesn't mean यहाँ पे आ जाएगा, वर्कशीट के बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा जहाँ पे वर्कशीट फिनिश हो रही है. ठीक है. सो आफ्टर दैट वी हैव अ एंटरिंग डेटा. हाउ यू कैन एंटर डेटा इन अ वर्कशीट. क्लियर? सो देयर आर सम वेज टू डू दैट. ओपन अ न्यू वर्कबुक. So for entering a data you have to firstly open the workbook. आपको workbook open करनी है जिसमें आपको data enter करना है. When you open the workbook, you will see the sheet number 1 as your active worksheet. जो sheet number 1 होगा वो आपका active sheet होगा. For this, click on the cell D1. आप D1 पे click करोगे. So this is your D1. So suppose you have to make this chart. Okay, so weekly expenses you will write. How you will write? D1 पे click करोगे, you will write weekly expenses. After that press the enter key. Now select the cell range where you enter the text. Click on the merge and center button
सो अलाइनमेंट में आपको क्लिक और सेंटर का बटन दिखेगा. सो यू कैन सी. सो ये सारे के सारे सेल्स कंबाइन हो गए हैं. देखो, देर इज़ नो लाइन बिटवीन देम. And how you can do it? With the help of merge and center. So after this, the next step is to click on the cell A2 and type items. You will write type items here. It is the cell number A2. Press the right arrow key, because right arrow key will move you to one cell to the right. Clear? And type Monday in B2, Tuesday in C2, B2, then C2, then D2, then E4. इस तरह से आप लिखते जाओगे with the help of arrow button. ठीक है, मूव करने के लिए. एंड क्लिक ऑन द सेल A3. A3 पे लिखोगे E tables and press the enter key. The cell point shift to the A4. Then cold drinks. And this is how you can enter a data into your worksheet. Clear? So in the next class we will discuss this one, that is types of data. So till then, take care, bye, and have a good day.